I welcome you all to this special discussion lecture of economics specific question of prelims 2025 exam held today. So I will be just limiting myself to the question related to the economy. And in this paper, I guess 16 to 17 question related to economy has been asked. And those questions are basically in the from the area of public finance. Two very straight and direct question were there related to the fiscal deficit and the primary deficit. That means if you just know the basic concept and the formula, you can solve those questions. One question was basically from the Finance Commission, 15th Finance Commission recommendation. Then you find questions from the finance and management, rather finance and banking, we can say, related to the banking part, related to the finance, that alternative finance sources, RBI के इनकम के सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वाज देयर, RTGS और NEFT से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सो यू कैन कंसीडर एज पार्ट ऑफ द बैंकिंग. सम करंट रिलेटेड क्वेश्चन इज देयर, सम स्पेसिफिक प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन इज देयर. So agriculture I find only one question, and what is missing was basically the question from the industry sector, question from the services sector, क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द बेसिक फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन जो ओकेजनली पूछे जाते हैं. तो दैट वाज द मिसिंग पार्ट, द इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन एंड द नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट. बट मेजरली इट वाज फोकस्ड ऑन पब्लिक फाइनेंस, then in general banking and the finance part, and current and the agriculture sector. So I am discussing basically the set B. So you can see that set B question. So in set B, economy related question is starting from question number 31. Question number 31 से begin हो रहा है. You can see that question here. This set B first of all. Now in this set question number 31. Question number 31 was with reference to the investment. With reference to the investment, this is question number 31. With reference to the investment, consider the following. With reference to the investment, consider the following. And four informations are given: bonds, stocks, hedge funds, and venture capital. How many of the above are treated as an alternative investment fund? Alternative investment fund कह रहा है. ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया जो सोर्सेज ट्रेडिशनल से फाइनेंस नहीं हो रहे. ट्रेडिशनल में इनफैक्ट स्टॉक्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स को छोड़ के ऑल्टरनेटिव फाइनेंस बेसिकली दैट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आर privately pooled investment that invest in assets outside traditional stocks and bonds. So outside traditional stocks and bonds, so stocks and bonds आपके हट गए, तो second and fourth, only two is correct. So answer to this question will be B, only two. This will be the correct answer. ठीक है. Now question number 32. 32 is which of the following are the sources of income of for RBI? Which of the following are the sources of income for the RBI? मतलब from which source RBI earns income? So there are again 5 information given. Buying and selling government bonds. So buying and selling the government bond, government will be getting a return on, RBI will be getting return. Buying and selling the foreign currency, from there also. Pension fund management is not for the RBI. Lending to the private companies, so private RBI do not directly lend to the private companies. Printing and distributing the currency notes is technically called as the seigniorage. What is the face value of the currency and what is the printing cost? The difference of that can be considered as a source of income. So 1, 2 and 5. So 1, 2 and 5. That means correct answer here will be D. Okay, 1, 2 and 5 will be correct. 1, 2 and 5.
And question number 33, you can, that was current. Question number 34. Question number 34 is, the Reserve Bank of India mandates, the Reserve Bank of India mandates all listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. It is not all. It is a 1000 listed companies. उनके लिए होता है. It is for 1000 listed companies, not for the all. So that was basically an important part here. It was not for all. So first is incorrect. Now in the second part, in India, a company submitting a business BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. That is correct. It is not for the financial disclosure. It is for the non-financial disclosure in the area of environment or social or the governance. So first is incorrect, second is correct. So only second is correct. So the answer will be B. Clear, second only. Statement याद रखिएगा, statement you have to read it very carefully, the question. So that term was basically for all, it was only for the 1000 listed companies. Then question number 35. Consider the following statement. Now statement given is, in India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. तो एग्रीकल्चर और उसके जो अलाइड एक्टिविटीज है, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, विच इज नॉट द केस. Poultry and the wool rearing is basically included in the tax net. It is not the complete agriculture that is exempted. It is allied we are referring to. So that first statement is incorrect. Second, in India, rural agriculture land is not considered as capital asset under the provision of Income Tax Act 1961. So in India, land is not considered as a capital asset, which means this statement is correct. It is not considered, that means land को sell करने से अगर कोई gain हो रहा है, so it is not covered as a capital gain tax because it is not considered. So first statement is incorrect, second one is correct. Statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. So again it is a D. This one 35 D. Correct answer is D. ये एक लॉट का क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे. देन क्वेश्चन नंबर 37. Now this is an interesting question related to, we can say, the concept, and the question says, as regards return, statement 1 is, as regards return from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at a lower risk than stockholders. Bond holders are relatively at a lower risk than the stockholders. That is the statement number 1. Now second part is, second statement says, bond holders are lenders to the company, whereas stockholders are its owner. That is correct. Stockholders, basically once you buy the stock, you become the owner of that much. Suppose you buy equity 2%, so you are owner of 2% of the firm. So but bond holders are basically the lenders. You are buying the bond and thereby you are lending money to the firm. On that lending you will be getting the return. So bondholders are lenders and company, whereas stockholders are the owner. And third statement is, for repayment purpose, bondholders are privatized over the stockholders by a company. That is, बैंक के पास, कंपनी के पास जो रेवेन्यू आएगी उसको जब आपको रीपे करना है, तो बॉन्ड होल्डर्स के रिटर्न, बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न पहले पे करेंगे. इफ देयर विल बी समथिंग लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ दैट, सम प्रॉफिट इज लेफ्ट, then only it can be distributed with the stockholders in the form of dividend. So obviously the bondholders are at a relatively lower risk stockholders के comparison में, because bondholders को एक certain return मिलना है. बॉन्ड होल्ड में भी रिस्क होता है वैसे बॉन्ड, बट बॉन्ड पे अगर प्रॉमिस कर रखा है कि ऑन दैट बॉन्ड यू विल बी गेटिंग 5 रुपीज एवरी ईयर, तो वो 5 रुपीज तो मिलेगा. बट 100 का बॉन्ड हमने बाई कर रखा आज विद द प्रॉमिस दैट आई विल बी गेटिंग 5 रुपीज,
but the value of that bond can go up or it can go down, so there could be risk there also, but वो 5 rupees का रिटर्न श्योर है. स्टॉक में वो 5 rupees का रिटर्न भी नहीं है. It can go up, it can go down. So as compared to the stockholders, bondholders at a relatively lower risk. So first statement is correct, and second and third basically explain that. Both second and third are correct, and both of them explain the statement one. दोनों ही रीजन है. एक तो वो लेंडर है इसलिए वो, एंड सेकेंड बेसिकली प्राइवेटाइज होगा जब कभी रेवेन्यू शेयर होगा तो बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न पहले मिलना है. तो क्वेश्चन नंबर 37A. 37A. Then question number 38. Consider the following statement. Again, three statements are given. India accounts for a large portion of all equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. Second, India's stock market has grown rapidly in the recent past, overtaking Hong Kong at some point of time. So first and second both are basically correct. Third, there is no regulatory body. Now that makes question easy. There is no regulatory body either to warn small investors about the risk options. So in fact, SEBI regulates, SEBI warns or provide information about to the small investors also, safe and the risky investment. So first and second is correct. So option A, first and second is correct. Clear? 30. This was question number 38. Now 39 and 40. 39 again also, if you just understand the term circular economy, then you can explain this. Circular economy reduces emission of greenhouse gas. Circular economy का concept basically है कि जितने भी resources या material use कर रहे हैं वो circulation में रहें, मतलब उससे leak out ना हो, wastages ना हो. That is the core idea. So circular economy reduces the use of raw material and it reduces the wastage. So 39A. Both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. ये तो कुछ नए टर्म पूछे गए, ज्योग्राफी इकोनॉमी रिलेटेड भी आप कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन, बट some just understanding of the term, if you understand the term, what is the meaning of that term, so I think you can answer this question. Then question number 40 is again basic concept of public finance का. Consider the following statement. Capital receipts create liability or cause a reduction in the asset of the government. Capital receipts, तो अगर if you know the meaning of capital receipts and what is revenue receipts, तो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज चेंज होते हैं. तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वहां पे कोई एसेट्स और लायबिलिटी चेंज ही नहीं होते. तो कैपिटल रिसिप्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, बट डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट का एसेट डिक्रीज हो गया. बोरोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट, बट बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट हो गई. क्लियर? सो कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज करेक्ट. Borrowing and disinvestment are capital receipts. If you know the example of what are the capital receipts in the government budget, from there you can answer. Interest received on loans create a liability of the government. Interest received on loan, government is receiving low interest on the loan. So interest on the loan you don't have to repay it, so there is no liability. So third is incorrect. Which of the following are correct? 1 and 2. 40A. 1 and 2. क्लियर? तो अगर आपको कंसेप्ट बजट का मालूम है कि बजट के अंदर रेवेन्यू अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है. रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कैपिटल अकाउंट में रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट्स है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग इन नेचर है, जैसे मान लिया सैलरीज है, गवर्नमेंट के स्टाफ को सैलरीज पे करने, दैट विल बिकम एज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवरी ईयर.
लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी हमारा रेवेन्यू है, जो रेकरिंग इन नेचर होगा। तो रेवेन्यू में कोई एसेट्स और लायबिलिटी चेंज नहीं होते, बट कैपिटल के अंदर है। सो दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली फॉर द कैपिटल पार्ट, कैपिटल बजटिंग के लिए। फर्स्ट क्लियर है, कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटीज एंड कॉज रिडक्शन, borrowing and disinvestment are the capital receipts, interest received on loan create a liability, that is incorrect. So question number 40 then. Question number 44. Question number 44, this. Consider the following statement about turmeric during the year 2022-23. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. That is the first statement, which is correct. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. That statement is also correct. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are the major turmeric producing states in the economy. That third statement is also correct. So 44D, 1, 2 and 3, all three are correct. ऐसे क्वेश्चन अब इट डिपेंड्स अपॉन कि वो फैक्ट आपको मालूम है या नहीं मालूम, रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक question. So question number 44, 9 question from economy section begins from, one question is question number 50 is again on the current we can say program. Question number 50, this one. Consider the following statement about the Rashtriya Gokul mission. So statement about the Rashtriya, that means program related, if there are recent program. So out of those different program, recent program, 1 or 2 occasionally paper में हर साल पूछा जाता है. But it is not that you only know one fact, you have to learn various facts related to that program. So it is first is, it is important for the upliftment of rural people as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. So that statement is correct. It was initiated to promote indigenous cattle, and that is statement is again correct. ठीक है, वो फर्स्ट पेज के ऊपर ही गिवन है. इफ यू गो बाय द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके फर्स्ट पेज के अंदर ये सारे दोनों इंफॉर्मेशन है. तो both 1 and 2, correct option C. Clear? Then another chunk is starting with from question number 71. अब ये दो क्वेश्चन, इनफैक्ट 71 का एक क्वेश्चन इस पेज के ऊपर है, ऑन द सेम पेज यू फाइंड वन मोर क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है. दिस वन 71, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट गिवन है, एंड आई थिंक ऑन द सेम पेज दिस 75, a country's fiscal deficit stands at this much amount. मतलब एक बेसिक कंसेप्ट से ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं. एंड दैट कंसेप्ट इज दैट इफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, how it is different from the budget deficit, what is the meaning of primary deficit. So if you know that concept, you can answer this question. So question says, suppose the revenue expenditure is 80,000. Focus on this. Revenue expenditure is 80,000. So what is revenue expenditure? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो रेकरिंग इन नेचर होंगे, जैसे गवर्नमेंट स्टाफ की सैलरीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू रिसीप्ट्स, government is getting interest, so that interest part will become basically the revenue receipts. Government expenditure 80 and government revenue receipts are 60, so revenue deficit will become 20,000. So पहला statement आ गया, revenue deficit is 20,000 because revenue deficit is difference between revenue expenditure and revenue receipts. The government budget also shows, this part is important, borrowing of 10,000 crore. Question is when government need to borrow. गवर्नमेंट के बोरिंग का अमाउंट 10,000 करोड़ गिवन है. अब गवर्नमेंट के बजट में एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स दोनों होते हैं, और रेवेन्यू अकाउंट भी है और कैपिटल अकाउंट भी है. अब जस्ट इलैबोरेट दिस पार्ट बिकॉज दो क्वेश्चन से सॉल्व हो जाते हैं. इफ यू जस्ट सी द व्हेन यू गो बाय द गवर्नमेंट बजट हैज इन फैक्ट टू पार्ट.
One is a revenue and second is capital. Revenue has two parts, capital will have two parts. So revenue expenditure and revenue receipts. Similarly, capital expenditure and capital receipts. तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर बेसिकली होता है जितने भी एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट्स बेसिकली इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ बोरोइंग, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स. तो गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट को डिसइन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट का एसेट डिक्रीज हो गया. साथ में गवर्नमेंट ने अगर बोरोइंग की है तो वो भी बोरोइंग इज पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स. नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द बजट डेफिसिट, रेयरली अब वो वर्ड यूज किया जाता है, बट बजट डेफिसिट अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, माइनस टोटल रिसीप्ट्स. इन बट व्हेन इट इज टोटल, दैट मींस रेवेन्यू टोटल एंड कैपिटल टोटल, व्हिच विल इंक्लूड बोरोइंग आल्सो. अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग ज्यादा करेगी तो गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीप्ट ज्यादा आ जाएगा और बजट डेफिसिट विल बी लोअर. सो दैट वाज अ फॉल्टी इंडिकेटर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस. So for that purpose, we government started calculating the fiscal deficit. तो फिजिकल डेफिसिट में क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंप्लीट लेंगे, बट कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग को छोड़ के लेना, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, ऑल नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, जहाँ पे डेट क्रिएट नहीं हो रहा, तो बोरोइंग को छोड़ के लेना. तो जितनी भी अमाउंट का डेफिसिट रह जाएगा, दैट अमाउंट विल बी रेफर्ड एज द फिजिकल डेफिसिट. The question is, if there will be a fiscal deficit, then government need to borrow to meet that deficit. Government need to borrow to meet that deficit. So in this question, when it say that there is a government borrowing of 10,000, so we can say that due to that fiscal deficit of 10,000, government की borrowing 10,000 है. इतने का deficit होगा fiscal, वो हम finance करेंगे by borrowing से. So if you know the fiscal deficit or if you know the borrowing, it is one and same thing. So 10,000 can be considered in that way as the fiscal deficit, government borrowing. और फिजिकल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट रह जाएगा. तो इंटरेस्ट पेमेंट का कंपोनेंट गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट इज 6,000, सो 10,000 माइनस 6,000, 4,000 will become the primary deficit. Fiscal deficit is 10,000, revenue deficit is 20. All three are correct, so your option will be 1, 2 and 3, D. Clear? All three statement is correct. Then 75. Again similar question, 75. Focus on this. A country's fiscal deficit stand at 50,000. यहाँ fiscal deficit directly given है. It is receiving 10,000 crore through non-debt creating capital assets. Non-debt creating capital assets. What could be the non-debt creating? जैसे डेट क्रिएट नहीं हो रहा है बट वो कैपिटल एसेट्स है, लाइक डिसइन्वेस्टमेंट. तो डिसइन्वेस्टमेंट को तो एनी हाउ हमने फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते समय काउंट कर रखा है. When you have calculated this 50,000 fiscal deficit, you have already taken care of all the expenditure and all the receipts excluding the borrowing. So that point has already been taken care of it. फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट लायबिलिटी है 15,000 की. तो इंटरेस्ट लायबिलिटी अगर 15,000 की है तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 35,000 का प्राइमरी डेफिसिट हो जाता. अब यहाँ पे कह रहे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, बट 35,000 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो according to me this will be none of the above, D. ठीक है. तो दो क्वेश्चन बिल्कुल वी कैन से फ्रॉम द सेम टॉपिक और सिमिलर कंसेप्ट. एक कंसेप्ट अगर मालूम है, यू कैन आंसर बोथ द क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 76. It is from Finance Commission. Question number 76. Read that question first. Question says, which of the following statement with regard to recommendation of Finance Commission in India are correct? First is, it has recommended grants of 4,800 crore for the year 2022-23 to the year 25-26 for incentivizing states to enhance educational outcome, and this statement stands correct.
Second makes the question easy. 45% of net proceeds of union tax to be shared with the states. तो अगर आपको जस्ट वो डिवोल्यूशन में पता है कि स्टेट और सेंटर के बीच क्या डिस्ट्रीब्यूशन है 15th में, इट वाज 41 और U2 कंसीडर करने के बाद तो 41% का और यहाँ इंफॉर्मेशन 45% का गया. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड 45,000 crore are kept as performance-based incentive for all the states carrying agriculture reform. That is correct, and it reintroduced tax effort criteria for rewarding the fiscal performance. So only one is basically incorrect. Second one अगर इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली अगर आप एलिमिनेट करने से भी आंसर निकाल रहे हो तो सेकंड इनकरेक्ट है तो ए और बी तो हट जाएगा. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 76 will have C. (76) 77 question is consider the following statement with respect to the IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. So that is popularly known as the World Bank. So it was reconstruction and development. So what was reconstruction? Reconstruction जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन हुए थे उसको रिकंस्ट्रक्शन करना था. ड्यूरिंग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो डिस्ट्रक्शन हुए यूरोप में उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. So it was established to finance, that third statement you can read first. It was established to help Europe rebuild after the Second World War. So that statement is correct. It works single-handedly to help developing countries to reduce poverty. See, poverty reduction is a major objective, but it is not the only objective of the World Bank. And it provides loan and guarantees to the middle income countries for the development purpose. So that is correct. So second is incorrect. First and third. So answer will be C. First and third. Now three more question. 78, 79 and 80. 78 is again related to the banking. So it is referring to the RTGS and NEFT. तो बेसिक डिफरेंस भी अगर आप इन दोनों में मालूम है, बोथ आर बेसिकली मींस टू ट्रांसफर फंड. तो फंड ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस में रियल टाइम ऑब्वियसली होता है, तो ऑब्वियसली 24/7 ही ऑपरेट करते हैं, तो कोई टाइम कंस्टेंट नहीं होता. एनईएफटी में टाइम लग रहते हैं, रेस्ट्रिक्शन. सो फर्स्ट इज इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंट, व्हाइल इन द केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट. दैट इज करेक्ट. तो एनईएफटी अगर हमने दोपहर में कर रखा, अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में इट विल टेक सम टाइम, बट आरटीजीएस इज बेसिकली फॉर द रियल टाइम, सेम टाइम. So that first statement is correct. Second, in RTGS customer is charged for the inward transaction, while it is not for the NEFT. In fact it is not for any. कोई चार्ज नहीं लेते हैं आरटीजीएस करने के लिए, एनईएफटी करने के लिए. तो सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड, which is not the case. It is 24/7. Any time you can do that RTGS. While this is not true for the NEFT. So only first is correct. So 78A, only first is correct. ठीक है, करेक्ट आंसर की एक PDF यू कैन डाउनलोड. जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है उसको मैच कर सकते हैं विद डिफरेंट सेट. तो अगेन आई रिपीट, दिस फॉर सेट बी. देन 79 and 80. 79 you can say the current as per consider the following countries: UAE, France, Germany, Singapore and Bangladesh. How many countries among the above other than India were international merchant payment and accepted UPI? So basically it is France and Singapore. So only two. Option A. And the last question is again from the government program. So you can find two questions from the government program. Consider the following statement about the PM Surya Ghar
मुफ्त बिजली योजना, with target installation of 1 crore solar rooftop. So this statement is correct. Ministry of New and Renewable Energy aims to impart training for the installation. That is also correct. It aims to create more than 3 lakh skilled manpower. That statement is also correct. So all three in fact. So correct option will be D. Clear? तो ये इनफैक्ट इफ यू काउंट 17 क्वेश्चन है जिसको मैंने डिस्कस किया, 17 क्वेश्चन, बट गुड इनफ. यूजुअली इकोनॉमी सेक्शन से 15 to 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 15 to 20, sometimes 15, but it will always be in the range. And if you see the questions are limited to the public finance area, then finance and management and the banking part area. core industry, agriculture, सर्विसेज, उसके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. तो करंट रिलेटेड जो बैंकिंग का पार्ट हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सरप्राइजिंगली कोई मॉनेटरी टूल्स के बारे में क्वेश्चन नहीं है, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. तो मॉनेटरी टूल्स के क्वेश्चन होते हैं, बट अगेन आई सेड देयर आर सम एरियाज मिसिंग. मॉनेटरी टूल्स के इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सेक्टर वाइज इंडस्ट्री सर्विसेज के क्वेश्चन मिसिंग है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चन भी होते थे, वही मिसिंग है. So those 17 question were from the economy area. Yes, so I have discussed basically this because एक interesting point रहता है कि once you are through with the prelims, what are the correct, or because there are certain in any year you will find always कि 100 के 100 question जो मिल रहे हैं उसमें यूपीएससी obviously अगर आंसर जब प्रोवाइड, जब कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ डिक्लेयर होता है, by that time you get to know, but generally there are always some confusion regarding few questions. तो few question के अंदर confusion रहते हैं, मतलब वो correct आंसर आप dispute हो सकते हैं कि, but I think this year question में objectivity ज़्यादा है, वैसे confusion वाले question काफ़ी limited है और कम है. So this was the discussion for economy specific question for the prelims 2025. Thank you.